Hello learners, welcome back to English Honors Classes. This is Akriti and today I am here with you all to discuss the syllabus and preparation strategy of BEGC 102. So in this particular video, we will be discussing about the syllabus and I will try to discuss one or two PYQs so that it will be very clear to you all that what are the types of questions that you will be seeing in your paper in the upcoming exam. So without doing further ado, I will just share my screen. First of all, I will go through a PYQ so that आप लोगों को थोड़ा पता चले कि किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं. So this is the paper of latest cycle and the last cycle, that is December 2025, and your paper code BEGC 102, which is named as European Classical Literature. So European Classical Literature, as the word classical suggests, something that is of great value and is very old also. So we have 3 sections in our question paper and the maximum marks that it holds is 100. 3 सेक्शन में क्वेश्चंस डिवाइडेड है. लेट्स सी कि पहला सेक्शन किस पे बात कर रहा है. Explain any 4 of the following passages with reference to the context, giving brief and critical comments and 150 words each. इसमें आपको 4 सवाल को सॉल्व करना है. 5 नंबर का होगा सारा. एंड बाय द क्वेश्चंस A, B, C, D जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, I think this is from RTTC, that is referring to the context. जो टेक्स्ट आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है उनसे कुछ लाइंस उठा के दे दिया गया है. The first question, Goddess sing me the anger of Achilles, Peleus' son that fatal anger that brought countless sorrows. Okay, so this question is from Homer's Iliad. And once you have read that text, you will be able to answer this question. The second one is you are the one hit hardest by the fighting. Heck to you, mow them all and all for me. Where that I am and this blind mad Paris. This is from Helen's Lament to Hector, that is book 6. So again, this shows कि book पढ़ना important है. अदरवाइज आपके आरटीटीसी जैसे क्वेश्चंस छूटने के कगार पर आ जाएंगे. The sea, then I would not have to kill my father and marry my mother infamously. Now I am goddess and child of impurity, begetter in the same seed that created my wretched self. This particular lines are taken from Oedipus Rex. ठीक है, ये टेक्स्ट भी आपका सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है और ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जब आप लोग आगे भी बीए के बाद एमए करेंगे या फिर फर्दर चीज जब आप अपने थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में पहुंचेंगे तो इस टेक्स्ट की अहमियत आपको पता चलेगी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड वी रीड दिस टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव. The D1. My one cash he is promising, he hungers for my gold. So this particular lines are taken from the Pot of Gold by Plautus. Okay, so again, when my good father taught me to be good, scarecrows he took of living flesh and blood. This is taken from Horace. Okay, so reading Horace is also important. The last one. After assuming the form of a crone and whitened temples, wrinkles leaving her skin, bent back and tottering legs. This is taken from Ovid's Metamorphoses. Okay, so here we saw 6 different texts. Reading each one of them in this less time is not so possible. So I would suggest कि आप लोग कुछ चीज़ों को पिक कर लें, कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को अभी पढ़ें so that एग्जाम्स के हिसाब से आपकी प्रिपरेशन हो पाए. You can skip one complete text and have an idea of one text, not in so deep, but थोड़ा थोड़ा आइडिया आप उसका रखो ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसके बारे में लिख सको. अदरवाइज 6 देते हैं और इसमें से आपको केवल 4 करना होता है, तो अगर आप कोई 4 टेक्स्ट भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो. नाउ लेट्स कम टू सेक्शन बी जहाँ पे आपको बोला है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 250 वर्ड्स. 10 नंबर का 2 लिखना है और ये भी काफी अच्छी चीज है. शॉर्ट नोट्स. Peripatia. This is a term given by Aristotle. Okay.
In his poetics, he had coined the term peripecia, and peripecia का मतलब होता है reversal of fortune, एकदम से किस्मत का बदल जाना. And then unity of time. What is unity of time that is given by Aristotle? A play that takes place within the time span of 24 hours. That is unity of time. And formal verse satire ये आपको होरेस में पढ़ने को मिलेगा. And stoicism. What is stoicism? Stoicism is a philosophy that believes कि आपके साथ जो हो रहा है आप उसके साथ तो कुछ नहीं कर सकते, but the way you responding to the thing that has happened to you, you can have control over your actions. So ये एक philosophical belief है कि you cannot control what are the things that is happening to you, but you can control the way you are responding to that particular thing. Okay? So ये चार बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. आई गेस ये छोटे छोटे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है जो हर एक लिटरेचर स्टूडेंट को जानना भी चाहिए. सो आप इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं. At this time, directly jumping into syllabus, you can also read via PYQs. आप 3 से 4 साइकिल का PYQ एक साथ रख लीजिए सामने, उसे एनालाइज कर लीजिए और उस हिसाब से जो टॉपिक्स आपको लगते हैं कि बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं, आप उन सारी चीज़ों को वैसे भी पढ़ाई कर सकते हैं बिकॉज देयर इज टाइम क्रंच. Now, section C. Attempt any 3 of the following questions in about 350 to 400 words. 20 marks के 3 question है जहां आपको लिखने हैं. हाँ. That you will be writing in and about 5 to 6 pages at least. So the first question is very simple and straight. Comment on the ending of Iliad. You will have to read this text. You cannot skip this one. Then, illustrate the use of 3 unities with respect to Oedipus Rex. Oedipus Rex, a play written by Sophocles. And इसमें आपको 3 unities. 3 unities are the things given by Aristotle. जिसमें time of place, time of action, and one more thing that I'm forgetting at the moment. I will remind that later. Place, action, and time. Sorry. So this is the thing, 3 unities. And उसके respect में Oedipus Rex को आपको लिखना है. So reading this text is also important. You cannot miss Aristotle. Would you agree that pot of gold sheds light on position of women in society? Substantiate your argument with example from the text. तो ये थोड़ा in depth वाला question है. When you will read the pot of gold for whole, आप तब बता सकते हो कि उसमें position of society के बारे में क्या सारी बातें की गई हैं and all that. Write a note on the myth of Bacchus and why do you think that there was a clash in worshipping him? Again, you will have to read the whole text. Why did Ovid's metamorphosis? There is a typo error, so kindly negotiate with that. Why did Ovid's metamorphosis have such a powerful impact on subsequent literature and art? Elaborate. Ovid is too prominent even in today's time. So reading Ovid will not be a matter of loss. So I would suggest to read Ovid, Oedipus Rex, Iliad, all these texts in great detail. So moving forward with our syllabus discussion part, I will just show you that what are the things that you should read so that you will fetch good marks in your paper. So this is your name of paper. Okay. So we are English honors classes and we are providing the students of literature a lot of things. Like if someone is preparing for UGC NET, BET, SLET and JET type of exam, you can contact us. Even BPSC, TRE, TGT, PGT, UG, PG, English major, also IGNOU courses. You can visit to our website. Offline classes are available in Patna, that is situated in state of Bihar. Then if you want any other kind of guidance, you can contact on a given number, that is 810-262251. Okay. So the block 1, again there is 4 block and the block 1 deals with Homer's Iliad that focuses on 10th year of the Trojan War, especially the rage of Achilles. Here we see Homeric hero, analysis of Achilles and Hector as archetypes are important. War ethics, honor versus horror in classical age, and there is divine agency, the role of Olympian gods in human affair. What had the 4 units that they talk about?
एंड आई वुड सजेस्ट कि आप फर्स्ट यूनिट को बिल्कुल मिस ना करें बिकॉज फर्स्ट यूनिट आपका बेस बना देगा. अप्रोचिंग द इलियड, द एपिक एंड द होमरिक ट्रेडिशन. तो होमरिक हीरो को भी आप मिस ना करें. इससे हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए. What in the Homeric age? Honor versus horror. You should look upon it. Towards a political ethics, moral philosophy, or cultural norms. You can skim this part. Not skip, but you can skim this part. So the block 2 deals with Oedipus Rex, that is written by Sophocles. It is a Greek theater, the evolution from ritual to drama. फेट वर्सेस फ्री विल का एक थीम है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है. एंड द ट्रैजिक फ्लॉ ऑफ द कैरेक्टर दैट इज एडिपस, हमाशिया, वो भी काफी इम्पोर्टेंट है. और इसी में हम लोग कुछ चीज पढ़ेंगे. यूनिटी ऑफ टाइम, एक्शन एंड प्लेस. Greek theater major playwrights, you should obviously read this unit. Oedipus Rex की समरी और एनालिसिस जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनिट 3 से हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन था दिसंबर 2025 में. अरिस्टोटल के 3 यूनिटीज के हेल्प से एडिपस रेक्स को रीड करना. Oedipus Rex, a classical and modern tragedy. You should also go through this. The third block deals with Pot of Gold, written by Plautus, which analyzes the fabula Pelita and the shift from Greek themes to Roman domestic life. Okay, Roman social values and comedy. A thing, अगर आपको need हो तो आप ये लिख सकते हैं. That will help you in exam while writing answers. So, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले आपको उसका बैकग्राउंड जानना काफी जरूरी है. देन रोमन कॉमेडी के बारे में पढ़ लीजिए. पॉट ऑफ गोल्ड, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव भी अगर आप केवल पढ़ते हैं तो आई थिंक दैट विल बी इनफ in this time crunch. But you should read the both units that I have skipped for the moment, that is Pot of Gold 1 and Pot of Gold 2. Next, Horace and Ovid, they are the two most prominent writers of this period or this classical age period because इनका रेफरेंस हम लोग टुवर्ड्स द एंड ऑफ लिटरेचर करेंगे. अगेन रोमन लिटरेचर एंड इंट्रोडक्शन, ये अगर आप अपने ब्लॉक 3 में भी पढ़ लेंगे तो यहाँ पे भी काम आ जाएगा. कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है. होरेस के लाइफ एंड वर्क्स भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा. अगर आप चाहें तो 15 से 20 मिनट में इससे बस एक बार आप देख सकते हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है. देन इनके जो सटायर है उसका टेक्सचुअल एनालिसिस आप ले लीजिएगा 1 to 4. देन अविड के लाइफ के बारे में, बेकस के बुक 3, and also Pyramus and Thisbe book 4 and Philomela book, all these things. So let's discuss one more PYQ ताकि आपको क्लियर हो जाए कुछ और चीजें कि हमें और क्या क्या कर लेनी चाहिए. I've already discussed December 25. I will go with June 25 paper. Okay, just a second. Okay, as questions are क्वेश्चन पेपर हर बार सेम पैटर्न में ही सेट होता है तो ये भी 3 सेक्शन का है. तो सेक्शन ए डील्स विथ, ओके, यहाँ पर हमें हेक्टर, अकाइलस, पेरिपेशिया, यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कैथारसिस. एंड देन बेकस अराइव्ड ऑन द कंट्रीसाइड रैंग विथ एक्सटैटिक क्राइज. हेक्टर के बारे में लिखना है, अकाइलस के बारे में लिखना है. दैट मीन्स होमर इज टू मच इम्पोर्टेंट. दैट इज पेरिपेशिया. अगेन वहाँ कुछ टाइप एरर हो गया इसलिए वो पेरिपेलिया दिख रहा है. Peripecia, unity of action, catharsis. All these 3 are the terms of Aristotle. Aristotle is very important from literature point of view, not only from exam point of view. Then Bacchus arrived the countryside, rang with ecstatic cries. ये RTTC वाला work हो गया. Okay, इसको आप देख लीजिएगा. You cannot miss Aristotle. Then section B deals with 2 questions, 250 words, and we will see. Discuss the characteristics of an epic with reference to Iliad. Very simple question. Comment on the style of Horatian satire. Again, very simple. जब आप होरेस के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे तो आप ये सवाल को आराम से कर सकते हैं. What according to the chorus is the condition of the city of Thebes? Explain. A bit in depth but not so difficult. Comment on the ending of the pot of gold. Again, a simple question. Then section 3 deals with, do you think Euclio is finally integrated into society?
Give reasons for your answer. So this is an in-depth question. You will have to read the book. What brings about honor and horror? Do you agree? Comment keeping in mind the story of the Iliad. So एक पूरा यूनिट था इस पे डेडिकेटेड, so you must read that. Who is responsible for the fall of Oedipus' fate or Oedipus himself? Discuss. When you will read the whole summary and critical appreciation of Oedipus, this question will become very easy for you. Would you agree that both Hector and Achilles have claims for being the protagonist of epic? Give a reasoned answer. So मैं इस सवाल को आपके ऊपर छोड़ती हूँ. आप अपने यूनिट वाइज पढ़िए इसमें और try to answer this. Would you agree that emotion and meaning are blended together in tragedy? Discuss with reference to Oedipus Rex. Do you agree? Please comment down in comment section. And Oedipus Rex is important. You cannot skip Oedipus Rex. Does the pot of gold shed light on position of women in society, particularly with reference to the system of dowry? Give instances and justifications to substantiate your answer. सेम क्वेश्चन जो दिसंबर 25 में था वही जून 25 में भी है. कुछ कुछ क्वेश्चन सेम है, सो पीवाईक्यू से पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है. सो आई वुड सजेस्ट कि मैंने 2 पीवाईक्यू तो करा दिया है. इफ़ यू वांट more PYQs, you can comment down in the comment section, or you can text on our WhatsApp number so that we will be providing you with PYQs और आपके लिए थोड़ी पढ़ाई आसान हो जाएगी. So that's all for this video. All the best for your paper and thank you for watching. I hope you all get good marks. Thank you.